अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बट आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं तुर्किया खबर। मैं इस टाइम सैदपुर विलेज इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख रहे होंगे, अगर कैमरामैन साहब दिखा रहे हों तो सैदपुर विलेज जो है, यहाँ पे जो अपग्रेडेशन का काम है, जो तरक्याती काम है, वो दोबारा से जो है वो आगाज़ कर दिया गया। सैदपुर विलेज एक टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो पिकनिक स्पॉट है, लेकिन अब दोबारा से जो है इसकी रेनोवेशन का काम, इसकी अपग्रेडेशन का काम, इसको दोबारा से जो है वो दोबारा से यहाँ पे तरक्याती काम जो है वो करवाए जा रहे हैं। और सबसे जो खूबसूरत बात है, ये जितने भी यहाँ पे सैदपुर विलेज में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं वो आज़रबाईजान की जो हुकूमत है उनकी जानिब से करवाए जा रहे हैं। ये जितने भी यहाँ पे आप तरक्याती मंसूबे देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे जो है मामला चल रहे हैं, काम हो रहे हैं, ये आज़रबाईजान की जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, जो आगे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका पाकिस्तान को बहुत बड़ा ये इनाम है, तोहफा है। वो चाहते हैं कि जिस तरह बाकू को डिज़ाइन किया गया है, जिस तरह तुर्की में इस्तांबुल को डिज़ाइन किया गया है, इस तरह इस्लामाबाद में जो सैदपुर विलेज है उसको भी बाकू की तर्ज पर, और जो इस्तांबुल शहर है उसकी तर्ज पर जो है वो डिज़ाइन किया जाए। बहुत ही खूबसूरत जो है इस विलेज को डिज़ाइन किया जा रहा है। और सेम यहाँ पे जब आप आएंगे आपको बाकू और तुर्की वाली जो है वो फीलिंग आएगी। और जितने भी जो टूरिस्ट हैं जब इस्लामाबाद में घूमने आए तो वो जो सैदपुर का जो है वो विजिट लाजमी करें, क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है विलेज जो है बनने जा रहा है। और हम सबको जो है हमारे जो आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट साहब हैं, जो हुकूमत है, जो एम्बेसडर साहब हैं हज़रत फरादोब साहब, जो कि इस मामले को बड़ा सीरियस हैं और इस्लामाबाद में नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वो जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, फंड जारी कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान और आज़रबाईजान का रिलेशन है उसको मज़ीद जो है मजबूत किया जाए, मुस्तहकम किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इसकी जीती जागती मिसाल है ये तरक्याती कामों का होना। ये तरक्याती काम जो है आज़रबाईजान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए एक तोहफा है। I'm happy because of I'm here and now I see that this city is similar to Azerbaijan, and even I heard that your Prime Minister शहबाज शरीफ, yes, Sharif asked to our president that he wants a city like Azerbaijan, Baku, and now we see that this is yes, real Baku. Some of streets. You know, all the new projects are sponsored by Azerbaijan government. Really? Yes. Yes, because of it I proud of Pakistan and Azerbaijan, and yes, it's great. What can I say? You can ask me other questions. How did you feel to coming here Saidpur village? It's great pleasure for me, and I feel very I enjoy. How can we make strong relation between Azerbaijan and Pakistan? I think that day by day, year by year, our relations is getting more stronger, and so it means that we are not only a strategic partner and even brothers, and even our history is similar to each other. I mean that standing in Pakistan, Islamabad, what do you want to say to the Azerbaijan people? I want to say that Pakistan, for me, second my Azerbaijan, but I see here people very friendly to me, and even is very I see in here very hospitality. They are, and when you see you, it doesn't matter you are journalist, you are politician, you are simple people. He say we love you and we always respect you. And thank you so much for your time. Stay blessed. Stay blessed. Pakistan, Azerbaijan, Live long, Zindabad. Zindabad.